हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. So I welcome you all again to your favorite channel Physics Made Easy by DCP. So myself Dayalchand Pathak. So again we will start a new topic today, and today lecture is of class 11th. As written on board that today we will discuss about class 11th. We were discussing about unit and measurement. In that last lecture we have discussed about a device which is used to measure small distances up to 10 to the power minus 4 meter, that was vernier calipers. So today we will start another device. We will discuss today about another device. Its name is screw gauge. We will discuss about the device screw gauge, which is also used to measure small distances smaller than vernier calipers. Vernier calipers से भी कम डिस्टेंस को ये नाप सकता है. It can measure smaller than vernier calipers. जितना वर्नियर कैलिपर्स नाप सकता है उससे भी कम नाप सकता है. कितना नाप सकता है? क्या चीज है ये? तो हम लिखेंगे it is a device. This is a device which is used to measure distances up to 10 to the power minus 5 meter, means 0.00001 meter. It can measure very small distances up to 10 to the power minus 5 मीटर. कहाँ तक नाप सकता है? 10 to the power minus 5 मीटर मीन्स 0.0001 मीटर तक की डिस्टेंस को हम इससे मेजर कर सकते हैं. सो बहुत छोटी है ना. इसका नाम क्या है? स्क्रू गॉज. स्क्रू क्या था? साइंटिस्ट का नाम. गॉज साइंटिस्ट के नाम से रखे जाते हैं. नाउ प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे आप काम करता है? देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रूल. क्या रूल है इसका? किस चीज पर काम करता है? किस चीज को फॉलो करता है? देखिए, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट लीनियर मूवमेंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन rotation given to it. On which principle it work? It work on the principle that the linear movement means motion of a body. Motion, when body will move, that motion will depend on what factor? It will directly depend on rotation. Means if you will rotate any body faster, it will move. If it can move on axis, it will move faster on the axis. मतलब अगर कोई रोटेशन बॉडी रोटेट भी कर रही है, मूव भी कर रही है ना. तो जैसे आप रोल करते हैं किसी चीज को, जितना फास्ट आप रोल करेंगे उतनी ही तेजी से आप कवर भी कर पाएंगे, उसको ज्यादा रोल कर पाएंगे. दैट मीन्स द रोटेशन, इफ रोटेशन इज मोर देन मोशन विल बी मोर. लीनियर मोशन विल बी मोर. मतलब आप मूव करेंगे आगे भी, अगर आप रोटेशन तेज करेंगे तो अगर वो आगे मूव कर सकती है, yes or no, so it will move faster. So it work on the principle that linear momentum directly depend on rotation given to it. Yes, let's see कैसा दिखता है. देखिए कैसा होता है. If you see a vernier calipers in a screw gauge, there is a U-shape metallic piece. There is a U-shaped metallic piece on which at one end there is a metallic rod. There is a metallic rod B. This rod is called stud. 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 क्या बोलते हैं इसको? स्टड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टड. मेटेलिक रॉड. कैसी है? मेटेलिक रॉड है. दैट इज कॉल्ड स्टड. यस. देन एट इट्स second end there is a nut.
there is a nut. That nut, this is a nut. That nut is connected through a screw. A किससे जुड़ा होता है? स्क्रू से जुड़ा होता है. ये देखिए, this nut is connected through a screw A softly on it. एक स्क्रू इस पर जुड़ा होगा इस नट से. And further you will see that nut, on that nut there is a scale parallel to that. यहां पर क्या होता है? एक स्केल. There is a scale on the net. On the nut there is a scale. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Like this. Upside and downside, both the side there is values. Yes. So this scale is called. This scale. Which one is on nut? जो nut पर scale है उसे बोलते हैं क्या? Main scale. क्या बोलते हैं? Main scale represented by MS. क्या बोलते हैं उसको? Main scale represented by MS. Main scale may be in centimeter and millimeter. तो इस ये मेन स्केल किसमें भी हो सकता है? कल भी मैंने डिस्कस किया था इन 1 year कैलिपर्स ऑल्सो. दिस स्केल मे बी इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर. हो सकता है इसे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं और मिलीमीटर दोनों में नाप सकते हैं. यस. देन on this nut there is a cap. वहां पर क्या है? कैप. which can rotate on it. जो उस पर क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं. on the nut there is a cap. क्या है इस पर? एक कैप. this is a cap on it on which it can rotate. ये नट के इस कैप के ऊपर इसे रोटेट कर सकते हैं. means we can rotate this cap on it. and in that cap there is also a scale. उस कैप में भी क्या होता है? स्केल होता है. equally 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 15. Like this. Equally distributed. Equal divisions. क्या होता है? स्केल ऑन दैट कैप. ये क्या है? एक कैप. ऑन दैट कैप देयर इज ए स्केल. दिस स्केल इज कॉल्ड हेड स्केल और सर्कुलर स्केल. क्या बोलते हैं इसको? हेड स्केल और CS सर्कुलर स्केल. एंड दिस नट कैन मूव ओवर इट. ये नट इस पर घूम सकता है. ऐसे पीछे भी ला सकते हैं. ये जो नट है इस पर घूम सकता है. एट द एंड ऑफ दिस हेड स्केल, at the end of this head scale there is another device that is what? This is represented by R. This is called reset. What is this? Reset. This reset is in quality devices. जो quality वाले अच्छे screw gauge होंगे, in that you will see this. What is the work of this reset? By rotating this reset, whenever we will put the block here, the block can easily hold by these two rods with the help of this. Means it will avoid extra pressure. Means ये जब हम इसके यहाँ पर बॉल को क्या करेंगे? Between these two, if we hold any body, suppose we want to find out the diameter of this, when we will hold it between this. Yeah, suppose we want to find out the diameter of this wire. Then when we hold the body here between these two, then this reset will avoid extra pressure. कि ज़्यादा pressure उस पर न पड़े. Because the dimensions will change. If extra pressure will develop here, इसे rotate करने से अगर यहाँ पर extra pressure develop होगा, so its diameter will change due to pressure. So that is avoided by this reset. Yes. So this is screw gauge. So how many things are there? Main scale which we can measure in centimeter and millimeter. Similarly, there is a head scale or circular scale. On this head scale, maybe 50 division, maybe 100 division, maybe 200 division. So
किसी का भी बना सकते हैं। यस, तो या तो 50 खाने होंगे इस पर, या 100 डिविजन्स हो सकते हैं, 200 डिविजन्स हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। दिस सर्कुलर स्केल वी कैन रोटेट इट ऑन दिस हेड। यस, नाउ देन आफ्टर दिस इज स्क्रू गॉज। नाउ हाउ इट वर्क, लेट्स सी कैसे काम करता है। वी विल रोटेट इट ऑन this main scale. We will rotate the head scale over main scale, and the screw will move forward, and we will hold the, suppose we want to find out the diameter of this, so we will rotate it, then it will clamp between these two. इस तरह से पकड़ लेगा between these two, like this. When we will rotate, it will go closer. So extra pressure doesn't produce. For that we have used Richard. Yes. Now चलिए अब कैसे काम करता है देखिए। यहां पर हमने suppose we want to find out diameter of a wire, small wire, then we will put the body here. Clear? Now one point is on that we have to discuss. This is called pitch. Pitch of screw gauge. G-A-U-G-E. Screw gauge. Pitch of screw gauge. What is the pitch of screw gauge? See, when we will rotate this we can rotate this head scale over this main scale. So when we will rotate the head scale on this main scale, then whatever distance, linear distance it will travel during one rotation. एक चक्कर मैंने घुमाया, इसको घुमा सकते हैं इसके ऊपर। when we will rotate it one round, how much linear distance it travel, that distance is called pitch. So what is pitch? Linear distance travel during one rotation by head scale. Whatever linear distance head scale will rotate, move during one rotation, एक चक्कर घूमने में जितना भी डिस्टेंस हेड स्केल ट्रेवल कर लेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स पिच. यस, दैट इज कॉल्ड इट्स पिच. फॉर practical screw gauge, if you will see a practical screw gauge means which we use in practical laboratory, in that you will find that pitch is 1 mm and division on head scale will be 100. इस पर कितने डिवीजन होंगे? प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस पर 100 डिवीजन होते हैं, और जो पिच होती है मींस द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन कितना होता है? 1 mm. यस, देन you know we have to find out least count of screw gauge, LC, least count. How you will find out? Yesterday we have seen in vernier calipers the least count is found. Formula for least count is value of one division of main scale upon number of divisions in vernier scale. Here also same formula. Least count you will find out by formula pitch divided by whatever pitch will come. Pitch means distance travel in one rotation upon number of division on head scale. Number of division on head scale. That means least count for practical device. जो practical में device है उसकी least count कितनी आएगी? This is how much? 1 mm. Pitch is 1 mm. Divisions are 100. So it will come 0.01. How much it will come? 0.01. Yes, mm. 0.01 mm. Because for practical instrument, what is the pitch? Pitch is 1 mm. Pitch is 1 mm. Normally यही होता है. And divisions are 100. Whatever divisions will be there. So pitch जो होगी और जितने भी division होंगे, that is divided. So we will get the least count. हमको क्या मिल जाएगा? Least count. So these things are very important. What is pitch? Pitch is the distance to, जैसे आपने नट कसते हैं, नट कसते वक्त हम स्क्रू को घुमाते हैं. So during one rotation, एक बार घुमाया, during one rotation, whatever linear distance it will travel, that is called pitch. And that pitch is
that pitch will come during one rotation. And when we will divide that pitch by number of divisions on head scale, this will called least count of screw gauge. Yes, this is called least count of screw gauge. Is it clear? चलिए अब बात करते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट. चलिए बहुत इंपोर्टेंट और बहुत इजी है. Now we will discuss that how we will take the readings by screw gauge. हम screw gauge से कैसे रीडिंग लेते हैं. See, there will be a table, same serial number, main scale, circular scale or head scale, then circular scale into least count, then देखिए क्या क्या होता है. सीरियल नंबर होगा, एक खाना किसका बना होगा, सीरियल नंबर का. दूसरा खाना किसका बना होगा, मेन स्केल वैल्यू का. देन थर्ड रो इज फॉर सर्कुलर स्केल रीडिंग. फोर्थ इज सर्कुलर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. देन फोर्थ इज मेन स्केल प्लस circular into least count. Whatever value will come, you will add together. Then last one, zero error. Subtract and add zero error. If there is any zero error, you have to subtract and add to that zero error. Now how you will take the readings? देखिए कैसे लेते हैं reading. Suppose we want to take a reading. So serial number 1. Now we will hold. Suppose we want to find out the diameter of a wire. Suppose we want to find out the diameter of this wire. First of all, by rotating this main, we will hold this wire between these two. Suppose हमको मान लो इसका diameter निकालना, diameter of small wire. Then we will put that wire here. Then by screw, by this cap, we will move it. So this screw will move forward. So we will hold it between it. To avoid that एक्स्ट्रा प्रेशर फॉर रिचेट वी विल यूज. एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो उसका डायमीटर बदल जाएंगे. सो वी विल होल्ड इट. नाउ वट एवर वैल्यूज आर विजिबल, वट एवर मैक्सिमम डिविजन्स विजिबल ऑन मेन स्केल. मेन स्केल में जो सबसे ज्यादा डिविजन्स विजिबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज सी हियर, सपोज दिस इज मेन स्केल and 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Like this, suppose I have taken as example. Now this is what? This is the scale. 10, 5. Okay. Now suppose here when we hold it between, when this wire is stuck, when this wire is held by these two metallic rods, that time the head scale was here. मान लीजिए जब ये यहाँ पर होल्ड हुआ घुमाने से, तब हेड स्केल कहाँ पर था, यहाँ पर था. कितना नंबर विजिबल है देखिए, 5, 10, 15. So main scale division will be 50. जो कुछ यहाँ पर होगा last, that is called main scale division. Now then what will be this circular scale. Now see, whatever value of circular scale will come on this line, जो भी वैल्यू सर्कुलर स्केल का जो भी नंबर इस लाइन पर आएगा, that number is called सर्कुलर स्केल रीडिंग. मीन्स स्ट्रेट लाइन पर वर्नियर का जो भी नंबर आएगा, सपोज इसका 15 नंबर आया या 20 नंबर आया, सो तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग. ऑन दिस लाइन, बेस्ट coincide on this line, whatever value of whatever divisions of vernier scale will best coincide with this main scale line, that is called vernier scale. Then we will multiply this circular scale reading by least count 0.01, and then we will add them. It will come how much? 0.2. It will come 0.2. Then we will add these two. 15 plus 0.2. 15 plus 0.2. It will come 15.2. If there is any error,
then we will add and subtract that error also. That is called zero error. So this is the method to find out. Is it clear? Suppose again see, suppose you want to find out the diameter of this wire, you will hold it by rotating this head scale. You will hold this pen between these two. Then you will see which number is visible when it is tight. At that time, what number is visible on main scale, that is main scale division. Then on this line, on the horizontal line of main scale, whatever division will best coincide, इसी के ऊपर जो division इसका आ जाएगा, that is circular scale line. Is it clear? Right? Yes? चलिए. So now we will discuss. This is second point about the screw gauge. Now third point, we have to discuss about zero error. Yesterday also we have discussed zero error. Now what is zero error? See, when you will rotate it, when these two will just touch to each other, when this is A and B, when A and B will touch to each other, then क्या होना चाहिए? The zero of this head scale, जब A और B एक दूसरे को क्या कर जाए? टच कर जाए, without any device, without any object, बिना इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखे, there is no object. If there is no object and we rotate it, when A and B will touch to each other, then on this main scale line there should be zero of this head scale. हेड स्केल का यहां पर क्या होना चाहिए? जीरो. इफ अगर ऐसा है, देखिए कैसा है, लाइक दिस इज मेन स्केल. नाउ व्हेन इट इज टच, this is zero. That means zero is lying on this. See, the zero or head scale, the zero of head scale is coming on this line, best coincide on this line. That means we will write zero error equal to zero. There is no zero error. If it is lying on it, अगर ये इसके ऊपर आ गया, see, दोबारा देख लीजिए, when there is no object, you will just touch A and B. Then you have to see after rotating this हेड स्केल, सर्कुलर स्केल को रोटेट करने के बाद, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इस लाइन को टच कर गया, इसी लाइन पर आ रहा, मींस स्ट्रेट लाइन पर जीरो भी आ गया, दैट मींस देयर इज नो जीरो एरर. बट नंबर सेकंड, ऐसा हो जरूरी नहीं है. इफ देयर इज दिस कंडीशन, देखिएगा ध्यान से, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है. नाउ सपोज दिस इज द मेन स्केल. Yes, this is the zero of this scale. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10, like this. Now suppose the zero of this, इसका जो जीरो है, जीरो ऑफ this scale is below than straight line. जीरो कहाँ है? यहाँ हो. जीरो इज below that, यह है जीरो, मान लीजिए. Then there will be error. When you will touch A and B, the zero of this head scale is come down to the main scale. Main scale से कहाँ आ रहा? नीचे. Then there will be an error. Then there will be an error, and that error is called positive error. ऐसे error को क्या कहेंगे? Positive error. क्या बोलेंगे इसे? This is called positive error. Yes, this error is called positive error. Now, how we will find out? That means what is positive error? When zero of circular scale below the main scale line, that time there will be what? पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर. अगर नीचे है, देखिए माइंड कहेगा बार बार नीचे होने पर नेगेटिव होगा, लेकिन नीचे होने पर कैसा होगा? पॉजिटिव. इफ द जीरो इज बिलो ऑफ दिस लाइन, देन देयर विल बी ए पॉजिटिव एरर. हाउ यू विल फाइंड आउट दैट पॉजिटिव एरर? कैसे निकालेंगे उस पॉजिटिव एरर को? देखिए
पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू, यू विल सी विच नंबर इज गोइंग टू बेस्ट कोइंसाइड। यहां पर कौन सा नंबर आ रहा, सपोज यहां पर कौन सा नंबर आ रहा, 20 ऑन दिस लाइन। जीरो तो नीचे आया, जीरो कहां आ गया, नीचे। जीरो आ नहीं रहा, मान लो यहां पर कितना आ रहा, 90 नंबर आ रहा। इस लाइन को कौन टच कर रहा, 90 वाला डिवीजन कर रहा है, तो जीरो एरर होगा 90। डिवीजन कौन सा टच कर रहा, 90, 90 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, कितना आ गया, कितना आ गया, 0.9। दिस इज द पॉजिटिव। दैट मीन्स इफ जीरो इज बिलो दिस लाइन, बिलो दिस स्ट्रेट लाइन, अगर जीरो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे है तो कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हम देखेंगे कि इस जीरो लाइन पर कौन सा नंबर है। मान लो जीरो लाइन पर कौन सा नंबर है, 90 वाला नंबर जीरो लाइन को टच कर रहा है। सो क्या करेंगे, उस 90 नंबर को उसके लिस्ट काउंट से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द व्हाट, पॉजिटिव एरर। आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव एरर। अब इसको उस रीडिंग से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो फाइनल रीडिंग आई थी, जो अभी मैं टेबल दिखाई थी आपको, फाइनल रीडिंग में से इसको माइनस कर देंगे, पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे। यस, देन इफ इट इज नॉट, अगर ये भी नहीं है, क्या है, पहली कंडीशन है नहीं, जीरो को जीरो टच नहीं कर रहा, दूसरा जीरो नीचे नहीं है, तो और क्या हो सकता है। मान लीजिए लेट दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज द व्हाट, circular scale, for example. Clear? This is main line. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, like this. Suppose the 0 is coming above of this line. मान लो 0 इस लाइन के कहां आ रहा, ऊपर आ रहा। 0 is coming above, देखो 0 ऊपर आ रहा। That time we will call here error is negative, नेगेटिव जीरो एरर। यहां पर एरर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। देन हाउ यू विल फाइंड आउट दैट जीरो एरर, नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर इक्वल टू, क्या करेंगे, यू विल सी विच नंबर इज कमिंग ऑन दिस लाइन। सपोज द नंबर कमिंग ऑन दिस लाइन इज 10, कम नंबर आएगा ना, आप तो ऊपर चला गया। सपोज द नंबर कमिंग ऑन दिस लाइन इज हाउ मच, 10, then what you will do, you will subtract this 10 out of all the numbers, all the division of 1 square. Suppose in practical how many divisions are there, practical वाले में कितने divisions होते हैं, 100। तो what you will do, suppose on this line which division is coming 10, so you will do 100 minus 10 into least count, it will come out 90 into least count। suppose ये कितना होगा, कौन से टच कर रहा, 20 कर रहा, then you will what you will do, you will do 100 minus 20, कितना आ गया, 80 into list count 0.01। this is called negative error, this is negative। now this error we will add in the result, जो रिजल्ट आ रहे हैं उस पर हम इस एरर को ऐड कर, नेगेटिव एरर ऐड होगा, पॉजिटिव एरर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो दैट मींस इन if we will discuss about this screw gauge, we can write that reading equal to main scale plus सर्कुलर स्केल इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। कह सकते हैं जीरो एरर को माइनस करना है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल वैल्यू प्लस सर्कुलर स्केल डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। सो दिस वाज व्हाट, स्क्रू गॉज। सो नोट डाउन, देख लीजिए, दिस इज द स्क्रू गॉज। सो नाउ अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, सो दिस वाज द व्हाट, स्क्रू गॉज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस अप टू 10 to the power minus 5. Let's see, next point is what that. What is the next point? Now these are the small devices, main two small devices from which you will get the question in the competitive exam. These are the main two devices which is used to measure the small distances, which is used to measure the small distances. One ear calipers and second one is screw gauge. Now we will discuss about measurement of
large distances. Now how we will measure large length या large distances? Now how we will measure the large distances? बड़ी distances को कैसे measure करेंगे? See here, there are many devices to measure the what large distances. Number first, what are the method? Number first, echo method. Number first method is echo method. Everybody know echo means reflection method. आपने सुना है ना? When we shouting करेंगे तो क्या करता है? वॉल से रिफ्लेक्ट होकर वॉइस आती है. So this is work on the principle. Echo किस पर काम करता है? It work on the principle of reflection of wave. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. तो इको मेथड जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? वो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि वेव साउंड वेव जो भी है जाएगी कहीं से टकराकर वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी. सो क्या करते हैं, कहां यूज करते हैं इस मेथड का? सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस, जो माउंटेन है इसके हम डिस्टेंस नापना चाहते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम हियर वी वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस माउंटेन. इस पहाड़ की डिस्टेंस हाउ फार इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट. सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर, हम यहां पर खड़े हैं, ये टोपी लगाई हमने, क्या लगा रखी है? टोपी. स्मार्ट है, वी आर वेरी स्मार्ट. वी वांट टू बिकॉज सी वी वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस ऑफ दिस माउंटेन फ्रॉम हियर. सो वी आर स्मार्ट नाउ. सो फॉर दैट आई हैव गिवन यू कैप. चलो ये वाला कैप नहीं लगाते, अच्छा वाला कैप लगा देते हैं. हेड सरी गायब हो गया. ऐसा करते हैं, ये लगाते हैं. वी आर सो स्मार्ट, वी आर अंग्रेज, इंग्लिश में. So we want to find out the distance. So how we can use the echo method. So normally echo methods are used for on the earth to find out the far distances like this condition. So what we'll do, हम क्या करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर फायर करेंगे एक. मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, निकाली बंदूक और क्या कर दी, फायर कर दी. Then in that fire sound will produce. Let that sound travel. This sound will travel on this line. Then after reflection from this mountain, इससे टकराकर कहाँ आ जाएगी? वापस. And you will note the time when it will reach to you. Suppose the distance from this man to the mountain is how much? X. And the velocity of sound is, velocity of wave or sound is v. How much velocity? V. Time taken, how much? Small t. वापस when it will reflect to you, the time taken is t. उससे कितना समय लिया? t. Speed was v, distance is x. So we can use, we know distance equal to what? Speed into time. Speed and velocity are same, only direction values. Distance how much? x जब जाएगी, x जब वापस आएगी. Total distance x plus x. Speed v, time t. So this is 2x, v into t. So implies that x equal to v into t by 2. So by using this formula, you can find out how far the mountain from you. How far the mountain from you? By using this formula, this method is called echo method. This method is called echo method. Is work on the principle of reflection. किस पर काम करता है? On the principle of reflection. So like these distances, far distance, mountains are very far from us. So we can find out from us. किसी से नजदीक भी होते हैं, but these distances are cannot be measured by scale. By scale we can't measure these distances. So by this method we will measure the distances of mountain. Is it clear? I think yes. क्या करेंगे? फायर किया, फायर वेव्स जो साउंड है चली, रिफ्लेक्ट होकर वापस आई. टोटल डिस्टेंस हाउ मच? 2x. स्पीड वी हैव टेकन v. सर फ्रॉम वेयर वी विल गेट द स्पीड? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? देयर वाज अ साइंटिस्ट whose name was Newton. According to Newton, speed of sound in air is 280, but it was wrong. Then Laplace एक साइंटिस्ट आया. According to Laplace theory, speed of sound in air is
331 meter per second. So it will be given in your question, don't worry about it. Number second method. Number second. That is another method for measurement of large distances, that is laser method. Laser method. By laser method also you can measure the large distances. Which type of distances? By laser method we normally use this method to find out the distance of moon. Kiski distance like moon from earth. So large distances. So by this method we can find out like distance of moon from earth. So far distances in solar system by this method, laser method. Here this is laser light. Laser light is, this is called beacon light. Laser light have a quality. Laser light is monochromatic and non-directive light. Laser light क्या है? Laser light is a light which is monochromatic and non-directive. Very heavy words sir you are using. I know I am using very heavy words. These are new for you. Monochromatic and non-directive. What is the meaning of monochromatic? Monochromatic. What is the meaning of monochromatic? Those lights which contain or carry only one wavelength. केवल एक wavelength. You know that there is in white light. If I will tell you white light, how many wavelengths are there? 7 wavelengths. 7 waves. 7 lights are carried inside that white light. Yes or no? So that is not monochromatic. White light is not monochromatic. What is monochromatic light? Those lights which contain only one wavelength. जैसे red light, वो भी क्या है एक तरह से monochromatic light कहलाएगी. Red light. क्यों monochromatic कहलाएगी? क्योंकि if there is only red color, only red wavelength is there. So that is monochromatic. So what is monochromatic? Monochromatic lights are those lights which contain only one wavelength. उनके अंदर केवल एक wavelength चलेगी. Number second. Second is here. It is non-directive. किसी को लग रहा होगा non-directive मतलब कई सारे बच्चों का दिमाग कहेगा non-directive मतलब there is no direction. No. Non-directive का मतलब है if a laser is moving on this path, suppose laser light is moving on this path, it never change its path. ये अपने पाथ को चेंज नहीं करती, मतलब ऊपर नीचे ऐसे अपने को चेंज नहीं करती. It always move on a straight line. Laser light is always move on straight line. किसमें मूव करते हैं? Straight line. It never change its path. So this due to that reason it is called non-directive light. It never change its path. So these are the two qualities of laser light. This laser light is used to find out the far distances like distance of moon from earth. Distance of moon from earth. How we will measure this distance? See, suppose we want to find out the distance of moon from earth. Yes. So what we will do? We will send what? Laser light from here. What we will send? Laser light. And after reflection it will come back. Reflection. This is incident. We will send from earth. What we will send? We will send from earth laser light, and that light after reflected from moon, it will come back. Suppose the distance from earth to moon is x. Everybody know what is the speed of light. Laser light is also a light. Its speed is 3 into 10 to the power. Speed of laser light. How much? 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is also called c. Yes. So we will send laser light. Then it will come back after reflection. So we will note that time and we will apply the formula. Same formula. We know distance equal to speed into time. Distance equal to speed into time. Speed is c. Distance how much? X plus x. Same method. Now here, that the speed was
We don't know about sound speed, but here we know about laser speed. C3 into time is supposed T, then 2x equal to C into T, imply that x equal to C into T by 2. That means laser method is also work on the principle of echo. Laser method is work on the principle of echo, principle of reflection. ये भी किस पर काम कर रही है? It also work on the principle of reflection और principle of echo. किस पर काम करती है? Principle of echo पर काम करती है. Yes. So here we will send the laser light. These two qualities you keep in your mind. This is non-directive and what? Monochromatic. So formula is same here also. Good. Check. Next method for high distances. Which methods we are use?